Welcome back, everyone, to Beyond the Classroom with Bhavna and Dia. Today, we'll be in conversation with one of the finest all rounders in the world of cricket in UAE, Chaya Mughal, discussing on sports and more. Chaya is the Women's Cricket Development Officer, Emirates Cricket Board, UAE, and also the captain of UAE Women's Cricket Team. To name a few achievements of hers, she has a valuable experience of serving as a captain in staggering series of 50 consecutive matches. She led the UAE women's cricket team to an incredible record of 20 unbeaten games, which is second to Australia. Achieved the 11th position worldwide for recording the highest number of maidens bowled in a cricket career. She led the team in the historic debut of the women's D10 match played in Sharjah, UAE. Welcome, Chaya. Welcome, Chaya. It's a Thank true you. pleasure to have you Thank you over. so much for having me today. Okay, so Chaya, since आप जम्मू से हैं, so what's the story behind your journey of cricket from Jammu to Dubai? Okay, well, long story. To cut it short, I will keep it very simple. Uh, as everyone else, like an Indian, आपके blood में हाँ, ही cricket होता है. true. I make it a little funny by saying that, if you throw a pebble at, somebody, it will fall on a cricketer's head only in India. सही बात है. तो because Correct. I was also grown up in a family जहाँ पे क्रिकेट हर रोज़ देखा जाता था, क्रिकेट की बातें होती थी, क्रिकेट टीवी में हमेशा चलता रहता था, चाहे हाइलाइट्स ही हों, but then we are watching it continuously. So Continuously. automatically it's inculcated in you, it's like आपको गिफ्ट मिलता है आपकी फैमिली की तरफ से. So my brother, my father, being the cricket enthusiast, it came to me also. And then we used to play gully cricket, which makes us the smart cricketers. Actually, yes. देन गली क्रिकेट खेलते खेलते अपने अपने मोहल्ले में खेलना अपने फ्रेंड्स के साथ लड़कों के साथ देयर वाज नो जेंडर बायस इट्स Correct. लाइक कोई भी आ जाए बस हमें क्रिकेट खेलना होता था सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट बट as I started growing up, I started taking it up a bit serious because I know कि इसमें potential है आगे चल के इसमें अच्छा खेल सकते हैं and then lot of opportunities are coming up. So ऐसे करते करते then I joined the cricket stadium in J&K, which was not that developed at that time, MS Stadium, but now it's internationally recognized. There are few international Yeah. matches also that have happened there, which I'm really happy. लेकिन उस टाइम पे इट वाज जस्ट बन रहा था अंडर कंस्ट्रक्शन होता था और हम बहुत सारे एफर्ट्स करके वहाँ पे पहुँचते थे so that's how I started playing cricket. I played juniors, then sub juniors to start off with, then juniors, then seniors, sub seniors, and that's how I played the national JNK. I represented Jammu and Kashmir at the nationals, and I've played uh, school tournaments, district nationals, everything I've played back in India. So that's how I started playing cricket. और फिर धीरे धीरे as I grew up, I found out कि career को लेके भी थोड़ा बहुत हमको serious होना था तो in terms of better prospects, that's how I moved to UAE. कि थोड़ा अच्छा potential है यहाँ पे and then अच्छा work opportunity मिलेगा तो उसके साथ साथ cricket खेलने को भी होगा तो that's the thing which helped me to move here. So आप as a cricketer ही move हुए थे या as a teacher move हुए थे? No, I'm a teacher by profession. I'm a cricketer by passion. So Yeah. I had to come here for better career prospects. So that's the reason why I came as a teacher here. उस Uh, टाइम पे क्रिकेट का इतना ज़्यादा वो नहीं था हाँ. मतलब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना JNK में थी और यूएई में मुझे लगा था है लेकिन बैक देन व्हेन आई केम हियर इन 2009 you know it took me 6 years to know that there is women's cricket that existed in UAE. So 6 साल तक आई केप वंडरिंग कि यहाँ पे क्रिकेट के लिए मैं कैसे अप्रोच करूँ किसको अप्रोच करूँ एंड देन न्यूज़ में भी ज़्यादा कुछ हाईलाइट नहीं हाँ. होता था कुछ ज़्यादा टूर्नामेंट या मैचेस भी नहीं होते थे तो जिससे मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इनिशियल डेज में बट थैंकफुली आई वाज वर्किंग सो इतना टाइम भी नहीं मिलता था Correct. स्टार्टिंग में व्हेन यू कम यू आर रीलोकेटेड टू अ डिफरेंट प्लेस एंड you don't know anybody here you're new to the system you're new to everything and then contacts बनाने में relations grow करने में it takes a lot of time and I think मुझे 6 साल लग गए वो सब करने के लिए and slowly when somebody introduced me to then coach who was coaching the women's cricket उन्होंने बताया कि यहाँ पे women's cricket होता है फिर उनके थ्रू मैं एंटर हुई then कुछ मैचेस खेले and that's how I
got into the UAE women's cricket team. So, what do you think are the qualities for successful career in sports and how parents can help cultivate them in kids? Well, as a sports person, I would say there are a lot of qualities that you need to build in from a very early childhood age. It's like जैसे आपको teamwork, आजकल I've seen being a teacher also, teaching the kids, I've realized that nowadays kids are losing the spirit of working in a team. उन लोग को टीम में काम करना शायद आता नहीं है या शायद पसंद भी नहीं करते हैं वो लोग. Everybody wants to do things on their own, which is not helpful, which is not good at sometimes, because it's not leading you towards the success, because you need the support of other people. अगर आपके पास लोगों का support नहीं है तो आप ज़्यादा देर तक अकेले आगे नहीं जा सकते. You need people to support you from the back. So इसीलिए teamwork is something which I really want to emphasize here, which really helps you for the long run. और इसीलिए आई थिंक वेन एवर पेरेंट्स ऑल्सो आस्क मी क्वेश्चंस बीइंग अ टीचर आई वुड मिक्स अप बोथ द प्रोफेशन बिकॉज I would say it's my expertise. So then I've learned from both the things. That's how I can connect with a large majority of people. तो जब भी मुझसे पेरेंट्स पूछते थे like what are the sports that we should put our kids in, I would suggest कि it's the team games that really helps you. स्पेशली छोटी एज में अगर आप अपने बच्चों को टीम गेम्स में डाल देते हो, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, या basketball हो गया, any team sports which involve more than 5 or 6 people, that it helps you a lot of things. It's not only about the sports, but it's about your overall development, I would say. कि आप एज अ पर्सन कैसे ग्रो करते हो. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग विच वी नीड टू डेवलप. अदर देन दैट, सेटिंग अप द गोल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, you're like a balloon who goes anywhere in the air. जहाँ पे भी हवा चल रही है आप उस तरफ को जा रहे हो. I think that's not right. At times we should have goals, short term and long term both, so that हमें मालूम है कि आगे चल के हमें क्या करना है. And with the time margin should be there, तो so that you push yourself against your limits. आपका लिमिट इतना है, तो अगर आपके गोल्स हैं तो आप अपने आप को उससे ज़्यादा पुश करने की कोशिश करते हो. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. another important quality I would say is being consistent, and if you have decided something, आपको वो करना है, चाहे उसके बाद में जितने भी सेटबैक्स आ जाएं, बट आपको अपने आप को पुश करते रहना है. इट्स नॉट लाइक कि आजकल आई हैव सीन किड्स, when they start with something very passionately, they come for 2-3 weeks, energetic, full passionate, I want to do this, I want to do that, but 2-3 हफ्तों बाद ठंडे पड़ जाते हैं. It's like, no mama, I don't want to go, it's so hot outside, it's so It's hard tiring, work. I don't want to do that. आपने एक बहुत खूबसूरत चीज़ बोली कि टीम वर्क सीखना बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट क्रिकेट बोला जाता है कि इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल गेम, ये एक मेंटल गेम भी है. तो आपका क्या कहना है इस? डेफिनेटली इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट जिसमें आपको मेंटल सेटअप का यूज़ करना पड़ता है, बट आई वुड से कि आप किसी भी स्पोर्ट्स की बात करो, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल ट्रेट्स, इट्स अबाउट हाउ यू यूज़ योर मेंटल स्किल्स. इसके साथ में आपका मतलब फिजिकल इंड्योरेंस ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी देयर, लेकिन उसके अलावा हैंडलिंग द मेंटल प्रेशर इज़ समथिंग दैट मेक्स यू अ विनर और अ लूज़र, आई वुड से. तो ये भी एक आस्पेक्ट है जो आई वॉन्टेड टू ब्रिंग इन, प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड फ्रॉम द मेंटल आस्पेक्ट्स, लाइक इमोशनली अपने बच्चों को सपोर्ट देना. एज अ पेरेंट्स आई वुड से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका अपने किड्स के साथ में ऐसा रिलेशन होना चाहिए दैट दे आर वेरी ओपन अबाउट डिस्कशंस एंड sharing the things which are there. Like they should be open about anything, whatever is troubling them. If anything is there that they want to open up with you as parents, it should be that much trust होना चाहिए between the parents and kids. So as a parents, I think ये चीज़ आपको उनमें डालनी पड़ेगी. Then setting up routines at home, as parents, it's very very important. Like आप अपने घर पे भी रूटीन्स रखिए. इट्स नॉट लाइक आप जब दिल कर रहा है आप उठ रहे हो, जब दिल कर रहा है आपको लंच मिल रहा है, डिनर मिल रहा है. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. Yes, discipline के Having बिना discipline कुछ भी. by setting the routines is something that I would really stress on. क्योंकि इससे ना कि आपकी हैबिट्स इम्प्रूव होती हैं, बट ये आपको लॉन्ग रन में हेल्प करता है. सो एज अ पेरेंट्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने बच्चों को ये डिसिप्लिन, ये रूटीन्स
आप सेटअप करके दें. देन अदर देन दैट, एज आई सेड, इमोशनली आपको उन लोगों को हैंडल करना आना चाहिए. आपको उनको जब भी उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, यू नीड टू बी देयर, यू नो. दैट्स वन ऑफ द एक्सेप्टेंस, थिंग. जब कुछ Yeah. हार जाते हैं बच्चे तो एग्जैक्टली. So उसको it's डिफीट को एक्सेप्ट Yes, करना. yes, that I was coming to that point as Yeah. well, you know, like yes, teaching your kids about accepting anything that's coming your way, you know. yes, I agree. You know, even in a team, you know, when our teammates are performing and we don't on a given day, you know, it's like shayad main zero pe out ho gayi hu, but one of my teammate, you know, she has scored 50 or she has scored a century, then I'll be very happy for her because uski wajah se team jeeti Team hai, जीती. right? So if we don't support each other, here comes the teamwork again. अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक हम लोग विक्ट्री की तरफ जाएंगे. सो दैट्स वाई सेलिब्रेटिंग ईच अदर सक्सेस दिल से is something that is That something that has I to would be like there. to stress on again, you know. तो अगर आपको ये सारी क्वालिटीज़ आप बचपन से ही अपने किड्स में डालने लगोगे, सो वेर एवर दे गो एंड प्रैक्टिस विच एवर स्पोर्ट दे टेक, यू नो, इट विल हेल्प देम डेफिनेटली, नॉट जस्ट देम बट द टीम दैट दे आर प्लेइंग फॉर, यू नो. तो ऐसे आप एक ऑलराउंड इंडिविजुअल को तैयार करते हो. इट डजेंट हैपन ओवरनाइट, ये रातों रात नहीं हो course. जाएगा, बट देन कंसिस्टेंटली जब आप इसके लिए प्रैक्टिस करोगे, जब आप इसको डेवलप करोगे, यू नो, एक एटीट्यूड उनमें क्रिएट करोगे, तो आई थिंक फिर इजी हो जाएगा उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी और टीम के लिए भी. So how, since you're a high profile athlete भी है हो आप, you are a coach also, and you are और आपकी personal life भी है और media attention भी है. So how do you handle all that pressure, you know, and still keep performing or still keep that positive, thing in your team? Well, I think having a balance between your professional and personal life is very very important. You know, एक बहुत ही thin line होती है जिसको आपको balance करने की ज़रूरत होती है. Like I remember when I was a teacher and I used to play cricket also. It used to be very difficult क्योंकि teaching in UAE is very demanding. You know, it's not easy profession. And then I used to work till 3 or 4 o'clock. और उसके बाद घर पे आने में 1 घंटा लगता था. फिर उसके बाद में फटाफट अपना स्कूल का काम किया बिकॉज वी हैव टू बी रेडी फॉर टुमारो अगेन, यू नो, वी हैव टू बी रेडी विद द रिसोर्सेज, विद द लेसन प्लान्स एंड एवरीथिंग, यू नो. और फिर वो सब आप तैयार करके आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आईसीसी स्टेडियम जाते हो, जो अगेन इट्स लाइक 30-40 मिनट्स ड्राइव विच इज़ नॉट ईजी, यू नो. एंड देन फिर से आप ड्राइव करके वहाँ पहुँचते हो विद ऑल द एनर्जी, यू नो. आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट इट्स अ बर्डन फॉर यू बिकॉज वट एवर यू डू देयर शुड बी एन एन्जॉयमेंट, यू नो. सो जैसे ही वहाँ पे पहुँचना, फिर क्रिकेट खेलना, यू नो, 7 o'clock से अपना स्टार्ट होता था 10 बजे तक, कभी कभी 11 बजे तक भी होता था, 11, 11:30, 12 बजे घर आना, एंड देन अगेन गेटिंग रेडी फॉर टुमारो, 5 o'clock गेटिंग अप, यू नो. इट्स नॉट ईजी, बट देन अगर आपको कुछ करना है तो आई थिंक इट कम्स इन नेचुरली, यू नो. सो देर इज़ दिस थिन लाइन विच यू हैव टू बैलेंस, एंड आई थिंक इट कम्स विद द टाइम मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना जानते हो, अगर आप जानते हो कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उनके हिसाब से जब आप अपने काम को रख के उनको करते हो, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ हेल्प मी टू बी सक्सेसफुल, आई वुड से. And I would recommend this to everyone, like how to manage your time by setting up your priorities is one thing that's going to really help you in the long run. बिल्कुल. So as a coach, when you are training your team for a high profile tournament, what are the strategies that you use to foster a positive culture amongst the teammates? Okay, yeah, very important question actually. सबसे पहले आई थिंक आई वुड लाइक टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, एज ए कैप्टन ऑल्सो हैव डन इट इन माई टीम, कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पे डिस्कशंस आर वेरी ओपन, यू नो. इट्स लाइक एवरीबडी इज़ फ्री टू स्पीक. You have given the freedom, the liberty for anyone to express your views. There's nothing silly here, you know. It's like कि ऐसा नहीं है कि तुम ये question पूछ रहे हो and it sounds very silly, you know. It should not be like that. But you're free to come up with your views or you're free to come up with the suggestions. I'm open to accept it, you know. Acceptance in a team is very very important. और हर एक को feel कराओ that you are an important person of the team. That's why you are in the team, you know. अगर एक टीम में 16 members होते हैं, all 16 of them are important. It's not only the 11 who play inside, but then those 5 which are outside, you know, जो एक टीम का environment create करते हैं, that is very very important. Everybody is important. So I think expressions freely
their views, their points is something that I would want to have in the team welfare, in the culture of the team. I would like to see this. Then sorting out the issues is very important. We should be Yeah. open about it. If there is any problem, let's accept it, let's admit it and work towards it. अगर कोई problem है तो आओ उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, because every problem has a solution. I always go up with this theory, like हर problem का एक solution है, right? Every lock has a key. So अगर कोई भी problem है तो right then and there, which is very important, the timing. Yes. It's not like अगर आज कुछ हुआ है तो आप उसको 4 दिन के बाद में सॉर्ट आउट कर रहे हो. नो, लेट्स सॉर्ट इट नाउ, ताकि ये जो बीच वाले 4 दिन है ये हमारे अच्छे से गुजर जाए. बिकॉज इन दी एंड वी आर ऑल प्लेइंग फॉर वन गोल, राइट? अगर हम सबकी एनर्जीज एक ही टारगेट की तरफ नहीं होंगी तो हम नहीं जीत सकते. ऑल ऑफ अस हैव टू बी ऑन द सेम पेज. And till the time we don't sort out our issues, I don't think we can be on the same page. Right? अगर आप अपने मन में भी वो बात रखते हो ना, तो it will be evident. जब कहीं ना आप कहीं कहीं ना reflect कहीं वो होता है वो. रिफ्लेक्ट हो जाती और है. गिले शिकवा ज़्यादा मल्टीप्लाई होने में Exactly, देरी नहीं exactly, लगती. exactly. तो अगर वो एक छोटी सी बात से शुरू होगा, वो शायद बड़ा भी बन बड़ा सकता बन है. सो व्हाई नॉट टू स्टॉप इट जब वो बहुत ही छोटा है, राइट? सो आई थिंक ये भी एक चीज़ है जो आई वुड लाइक टू सी इट इन माई टीम. Then again, I would like to emphasize celebrating successes is very, very important. एक टीम में हम सबको jealousy नहीं रखना चाहिए. It's like you don't jealous about your teammate, because in the end we are working towards the same goal. Same goal. अगर उसकी परफॉर्मेंस से हमारी टीम जीत रही है तो how does it matter? We should be happy about it, right? ये आज ये जीत रहे, कल तुम्हारा भी कल हमारा भी नंबर आ सकता है, राइट? इट्स नॉट सेम फॉर एवरीबडी. विराट कोहली ऑल्सो डजंट स्कोर 100. देर आर अदर टीममेट्स ऑल्सो हु कुड बी द मैच विनर फॉर दैट पर्टिकुलर डे. एक स्टार कोई भी हो सकता है, राइट? Correct. इट कुड बी यू वन डे, इट कुड बी यू अनदर डे, इट कुड बी माई सेल्फ ऑन सम अदर डे, राइट? और एक टीम में इट्स लाइक बैट्समैन, बॉलर्स, पीपल हु आर फील्डिंग. आई थिंक देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स कि एक तो नहीं जिता सकता. Exactly. And that's why it's called team, because all of you are important. तो इसीलिए अगर हम एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे तो फिर वो ग्रजेस हमारे दिल में नहीं नहीं रहते. रहते. देन वी आर फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव एनर्जी, और यही पॉजिटिव एनर्जी हम दूसरों में भी स्प्रेड करते हैं. सो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस थिंग, लाइक कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारे आसपास का ऑरा भी पॉजिटिव रहेगा. लेकिन अगर हमारे अंदर से नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना, तो दूसरे भी हमारे साथ में वही करेंगे. It's the way you give, it's the way you You get. get. So I call it the golden rule. Whatever you want others to do to you, You do have to to them do the it. same. Yeah. That's And what I moreover, I think this philosophy also works in your real life. You Yes. have an issue, sort it out Let's then sort and it out. there. Yes. Don't carry it forward. Yes. True that. So, can you share with us any, situation where you've dealt with a difficult fan or a difficult supporter? Well, on social media there are a lot of messages and stuff which comes on, Yeah. but I don't take much care of that because it's been handled by the PR team and stuff. Other than that, I remember once we were playing Asia Cup in Bangladesh, Okay. last Asia Cup, and it was like the match against India. We were playing against India. Being an Indian, playing against India was another great thing, I've experienced in my life, like when the True. national anthem is sung and then you get goosebumps, it's like Indian national Yes. anthem and you're Indian. Yes. And then, how to control your emotions. And then Correct. again, when the national anthem for UAE was sung, and then again, you're getting goosebumps. Goosebumps, You because can't you- understand the difference between the two, but it's like the respect that Correct. is there, So UAE that was a is- different story Yeah, altogether. UAE is like home away from Yeah, home home for away us. from home, true that. So I think that was a day when huge crowd had come from Bangladesh's and they were supporting, I think, more of Indian people because they were more famous than the UAE players. And then, at one point, one of my player, she was standing on the boundary line and she came crying. I said, what happened? She's like, I'm not going to stand there. I said, what happened? It's like people are teasing me from back. They're taking my name and they're calling me names and stuff like that. It's still like, it's okay. Then I went in there and then I stood up there, in place of her. And then it was literally very, very difficult time. And soon after the game got over, there were people who were waiting to take pictures and stuff, hanging out from the side Rails, balconies हाँ. and taking the picture and selfies was, I think that was like crazy moments. Yeah. Stadium
fervor Stadium is अलग ही होता full. है, Yes, you know, I yes. remember ग्वालियर में मैंने Especially. देखा था मैच, Okay. वर्ल्ड कप. Is it Oh my God, that's crazy? Which team? India versus South Africa, I think. Okay. या Wherever West there is Indies या India, South I mean, Africa. it's crazy. It's It is crazy. 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 Other than that, social media is like full of stuff, wherein you get messages which you don't even want to read sometimes, but Yes. then they are there. So, तो सोशल मीडिया की अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, आई देम काइंड बी बॉडी शेमिंग और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, तो इसका इम्पैक्ट प्लेयर पे तो ज़रूर पड़ता है. तो इसके लिए आप क्या करते हो? well, I think social media, I would say कि बहुत पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है. पॉजिटिव अगर हम इसको लेना चाहें तो हम इसके पॉजिटिव ले सकते हैं और हम नेगेटिव्स को एकदम से साइड पे रख सकते हैं. इट इज़ इन आवर हैंड्स व्हाट यू वांट टू टेक, वेदर यू वांट टू प्लग द फ्रूट्स or you want to take the thorns. It depends on you totally. So for me, I think I would say social media is a great platform जहाँ पे आप अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपनी अचीवमेंट्स को शेयर कर सकते हो लोगों के साथ में, एंड देन यू कैन बी अ रोल मॉडल. यू कैन शो योर सेल्फ कि मतलब आपने अचीव किया है कुछ ये करने से, तो आप भी ऐसा कर सकते हो. इफ़ आई कुड डू इट, आई थिंक यू कैन ऑल्सो डू दैट, राइट? Because it's a platform which is free of cost. First of all, you don't have to go anywhere. It's like one click of the button and you can share your whole story with the world, right? It's a great platform for that matter. But then if you want to uh, be very particular about the things that you're sharing, because sometimes it may take you into the trouble if the content is not right, if the content is fake, or you're trying to create something which you are not, then there are consequences. Correct. True. So अगर आप अपनी success stories को truly as it has come to you, if you're sharing it that way, people accept it. They're very happy about it, and it could be a help for the society also, for the Correct. nation also, because you're setting an example. आप मतलब कोई ऐसा बहुत दूर बैठा है जो शायद सोच रहा हो कि मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ या खेल सकती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं खेल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया से आती हूँ जहाँ पे क्रिकेट इतना ज़्यादा नहीं चलता है. सो व्हेन दे लुक एट योर स्टोरी, एंड दे फील, oh, she's just like me, and if she could do this, why can't I? It in that way you are indirectly एक एनर्जी थ्रो कर रहे हो. आप अपने फ्रेंड्स को या अननोन पीपल को ये बता रहे हो कि मतलब आपने ये सब करके ये अचीव किया है, तो आप भी कर सकते हो. इट्स लाइक अ कैटलिस्ट दैट वर्क्स invisibly somewhere. So, but at the same time, I would say that you have to be very, very particular about the things that you're sharing, not too much of your personal content, and then it may take you into the trouble if it's not dealt properly. So it depends totally on you कि आप इसको कैसे handle करें. For me, I think it's my PR team that works, and then there are people who manages my social account and thing. So I think it gets very easy if you have proper people who are setting up your things in a very positive way, then आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं. So but I would suggest कि मतलब इसको आप मिसयूज़ ना करें, बट ये अगर एक हमारे पास एक हैंडी टूल है, इसका एप्लीकेशन आप पॉजिटिव वे में करो तो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, rather than इट्स having a लाइक negative ग्रेट impact. सक्सेस के साथ में ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. So, what advice would you like to give to youngsters who want to start their, start to play sports as a career or as a passion, and what mistakes should they avoid? Okay, yeah, very good question. In fact, I would start with the few suggestions that I would want to give out of my expertise, out of my experience. I think सबसे पहले having realistic goals is very important. People say that aim high, reach the sky. Of course, it's there. But then अगर आप एक realistic goals नहीं रखोगे, तो आप उसको करने के लिए आप में वो हिम्मत नहीं आती है. अगर मैं बोलूँ कि मैं एक दिन में 100 पुशअप्स करूँगी, जबकि मुझसे 10 भी नहीं होते हैं, तो हाउ वुड आई डू दैट? नेक्स्ट डे आई वोंट इवन गेट अप, बिकॉज Correct. मुझे पता है मुझसे होगा ही नहीं, राइट? सो इफ़ वी वांट टू हैव द रियलिस्टिक गोल्स फॉर आवरसेल्फ, जो मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ, ओके, maybe 20 push-ups every day, yes, that's possible, I can do that, right? तो धीरे धीरे अपने गोल्स को आप बढ़ाओ, राइट? एक रियलिस्टिक गोल से शुरू करके आप उसको बढ़ाओ, अपने लिमिट से बाहर आओ. सो दैट्स वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, कि गोल्स होना बहुत ज़रूरी है. एज इन लाइक, डोंट बी लाइक एमलेस balloons
who are like flying anywhere in the sky, you know. But if you have a name, you know what to do, where to head next. That is very, very important. Then be persistent. You know, success, there is no shortcut for that, sorry to say. You have to work hard to earn it. और जब आपको success चाहिए, so there are many setbacks that will come your way. You know, don't give up. Don't ever give up. There's a very famous thing that I always say in my interviews. It's like a hero is someone who knows how to hang on 1 minute longer. You know, it's that 1 minute, That counts that sometimes. that time when you want to give up, you know, it's right there, the threshold point, you know. बस वो 1 मिनट के बाद में आपको सक्सेस मिलने ही वाली है. Don't give up at that point, you know. Just push yourself for 1 minute longer. And then again, when you want to give up, push again for one more minute. You know, just keep pushing yourself, and then you could be the hero. Anyone Amazing could be. thing. Beautifully Yeah. said. Yes. So Very that beautifully is said. very, very important. So, So being persistent, setting up the goals and routines, and then problem solving. Very important. Every problem has a solution. You have problems? No problem. Come, let's discuss. Let's find a solution. As I said, every lock has a Has- key, right? So be the problem solvers, not the problem givers. That is very, very important. so on BTC, we usually play rapid fire with our guest. So let's get you on to the hot seat for rapid fire. Chak De India or 83? 83. Your favorite cricketer? Sophie Devine from New Zealand. Okay. Toughest opponent you faced? India. How can I forget that? We did pretty well. In fact, in the Yeah. first 10 overs, we took like 4 of their early wickets. In my first over, I took Richa Ghosh, which was Wow. quite a, I would say, quite a success for me, you know. So, yeah, India. If you were not a professional cricketer, what would you be? Of course, teacher. 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 What is the first thing you notice when you meet someone? Not their appearance, of course, but I get connected with the vibes. So I think it's the aura that they create, the energy. Your current watch on Netflix. I'm watching the 100 series. Okay. Which team you supported in DP World ILT20? I was with the Desert Vipers. Okay. And which was your favorite ILT20 player? There were a lot actually, but Mohammad Wasim from UAE. Okay. Debut at Fair Break Global. First ball, first wicket. कैसा लगा? I got goosebumps, you know. It's something you can never forget. It's like, yeah, it's one of my fondest memories. It's very close to my heart. बहुत अच्छा लगा था. First ball, and then people are shouting. You have supporters from UAE. Your parents are there watching you. It was amazing. You know, first ball getting a wicket, and then people are screaming, shouting your names. It was immense satisfaction. Moment to cherish for your life. So, thank you so much, Aya, for all the insights. So, as we wrap up today's episode, I want to thank each one of you for tuning in and joining us in the journey through the world of sports. I hope you've enjoyed each moment as much as we have. So, keep cheering, keep competing, and keep chasing your dreams. This is me and Dia signing off on BTC. Thank you. Thank you. Thank you. Pleasure.